So students, let us begin with poem number poem number one, The Road Not Taken by Robert Frost. Now, in this poem, firstly, Robert Frost is talking about the career choices. Okay, let's say after 10th standard, you can either choice uh, science or commerce or arts. Okay, you have three options. After 10th, you can go either by taking science or commerce or arts. In the same way, he is talking about the प्रोग्रेस या लाइफ में आपको और क्या क्या करना है उसके बारे में सिखाया गया है. ठीक है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट द अमेरिकन पोएट, बराबर है. ये कैसे पोएट है? अमेरिकन पोएट है. इन हिज पोएम द रोड नॉट टेकन पोर्ट्रेड द चॉइसेस, ओके, that human beings have to make at important moments of their lives. ठीक है. हर एक बार आप लोगों को चॉइसेस मिलती है, बराबर. आप लोग पढ़ाई करने के टाइम पे भी आपके पेरेंट्स ने पूछा होगा वेदर टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट और दैट इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह. ठीक है. या फिर वेदर टू ज्वाइन दिस स्कूल और दैट स्कूल. ठीक है. या आप लोगों को जब भी 10th के पास आप जब क्लियर होंगे, ठीक है, तो यू विल चॉइस आइदर टेक साइंस कॉमर्स और आर्ट्स. ये एक चूजिंग आपके लिए आएगा ही. फिर इवन आफ्टर 12th, ठीक है, आप लोगों को कॉलेजेस के लिए ऑप्शंस वगैरह मिलते रहेंगे. तो अलग अलग ऑप्शंस हर एक लाइफ स्टेज में आप लोगों को एक अपने करियर बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल. वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को आप किस नजरिए से देखोगे और किस को चूज करोगे, वही यहाँ पे दिखाया गया है. यू कैन नॉट चूज एवरी स्ट्रीम. ओके, यू कैन नॉट चूज एवरी स्ट्रीम. इसका मतलब क्या है कि आप हर एक स्ट्रीम को, साइंस भी लेना है, कॉमर्स भी लेना है, आर्ट्स भी करना है, लॉयर भी बनना है, सीए भी बनना है और इंजीनियर भी बनना है. हो सकता है? पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो this title has a symbolic meaning. ठीक है. The road not taken is having a symbolic meaning कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी लाइफ में, ठीक है, किस तरह से अपने लाइफ को उन्होंने अपना पाथ, अपना करियर चूज किया गया है. ठीक है. पाथ और रोड. अब पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं. ठीक है. फर्स्ट स्टांजा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. सो टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. ठीक है. तो उनके लाइफ में दो करियर दो चॉइसेस हैं. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन येलो वुड. यहाँ पे ऐसा भले ही मेटाफोरिकल लाइन है ये. ठीक है. मेटाफोर का मतलब होता है ये दिस इज वन काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस. ठीक है. तो देयर इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द path choices and the two roads. Two roads का मतलब क्या है? You have two choices in which you have to travel. तो वुड और मैन्स लाइफ को कंपेयर किया गया है, इसीलिए इसको मेटाफोर बोला भी जाता है. ठीक है. सो टू रोड्स. सो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या क्या कहना चाहते हैं कि वो ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से उनको अपने करियर का चॉइस करना है. ठीक है. The poet says that he had come across the two paths at an important stage of his life and he knew that he had to decide to take one as he was just one traveler. ठीक है. वो अपना शरीर एक ही है तो दो जगह पे तो जा नहीं सकता, वो सिंगल भी जगह पे जाएगा. ठीक है. He could not have taken both the roads at one time. Even if he wants to do, he had to make a choice. ठीक है. तो यहाँ पे एंड बी वन ट्रैवलर मतलब ही इज ओनली वन. सो उन्होंने बहुत देर तक सोचा एंड देन ही डिसाइडेड, ठीक है, कि मुझे कौन सा पाथ जो है चूज करना है. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड मतलब दो पाथ में से उन्होंने जो पाथ अच्छे से उनको दिखाई दिया, ठीक है, उस पाथ को ज्यादा से ज्यादा देर तक उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, चलो अब मुझे ये पाथ पे जाना है. ओके. नेक्स्ट एंड लुक डाउन टू वेयर इट बेंट इनटू द अंडरग्रोथ. अब ये टू बेंट इनटू द अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है? टू बेंट इनटू द अंडरग्रोथ का मीनिंग है कि जहां तक उनकी नजर पहुंचे. अब आप लोग ऐसा देखना, ठीक है, दो रोड्स है,
ठीक है, एक पे आप लोगों को पेड़ देखने को मिलेंगे और एक जगह पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा शो। ठीक है, अब पेड़ आप लोग कौन कहां तक देख सकते हो, तो भाई आखिरी पेड़ जहां तक दिखता है वो आपका वो होगा। ठीक है, राइट, समझ में आया? तो सेम थिंग। नाउ नेक्स्ट I'm teaching about, yeah, reading out the what we say, second stanza. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. ये अब खास ध्यान से सुनना, ठीक है? सेकंड स्टैंजा जो है वो क्या कहना चाहता है पहले तो मैं इसका मीनिंग समझाता, ठीक है? यहाँ पे जो फेयर वर्ड है ना, फेयर वर्ड का जो मीनिंग होता है एज गुड एज अनदर वन। ठीक है, दो रोड है, दोनों को अगर चूज करेंगे, अगर साइंस लेंगे तो भी बहुत सारी फील्ड्स ओपन है, कॉमर्स लेंगे तो भी बहुत सारी फील्ड्स ओपन है, तो फेयर का मतलब एज गुड एज अनदर वन। ठीक है, देन यहाँ पे एक और वर्ड है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन। ओके, क्लेम का ऑप्शन वर्ड क्या होता है? बेटर ऑप्शन। एंड ग्रासी, ग्रासी का मतलब क्या होता है? अनयूज्ड। अब देखो दो रोड्स है, ध्यान से सुनना, आप जंगल में घूमने जा रहे हो, ठीक है, एक एकदम ग्रासी 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 है और एक पे ना ग्रास थोड़े थोड़े हट गए हैं। इसका मतलब क्या है? ग्रासी मतलब जो है अनयूज्ड होता है, और जो चीज यूज्ड हुई होती है, आप लोग देखना वहां पे फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलेंगे, पेड़ पत्ते थोड़े जो रहते हैं वो थोड़े ऐसे साइड ट्रैक हो जाते हैं, राइट, अंडरस्टूड? सो एंड लास्ट, वांटेड वियर मींस हैड नॉट बीन यूज्ड। तो यहाँ पे ग्रासी एंड वांटेड वियर हैव सेम मीनिंग। सो ये जो है फिगर्स ऑफ स्पीच की और देखोगे तो इट विल बी योर टॉटोलॉजी। सिंगल मीनिंग is used by two different words. Okay, single meaning is used by two different words, that is grassy and wanted wear. Now let me explain you first. Okay, the poet kept on looking on one path for a long time to check if he has chosen the right path or not, and then he decided and started working on the another path because he felt that the both paths were equally good. Okay, he says just as far as fair, so he felt both the paths were equally good and started walking on one of them. He adds that maybe he felt the path was better for him, so he chooses it had green grass okay on it which it has been unused. ठीक है, तो उन्होंने ऐसा लगा कि मैं अपना करियर इस डायरेक्शन में बनाना चाहता हूं जहां पे लोग कम गए हैं, इसीलिए he started walking on what? Grassy type of okay where then both the paths were similar and worn out. Even in our life we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. ठीक है, तो हम सबको जब भी हम लोग अपने करियर के बारे में सोचेंगे तो we can get some advantages, we can get some disadvantages, we have some challenges, we have some problems, but we have to overcome all of them, and we should be very wise while choosing our career. Third paragraph. And both that morning equally lay in leave, no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ठीक है, नाउ ये स्टेंजास में मीनिंग समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो पोएट क्या कहना चाहता है यहाँ पे? द पोएट सेज दैट both the paths were similar that morning. The morning in which you have decided कि भाई 10th का रिजल्ट आ गया, उस दिन आप लोगों के लिए साइंस कॉमर्स एक ही स्ट्रीम है, बराबर, राइट? सो both the paths were similar that morning but had leaves on them and no one had stepped on them as they were still green in color. He decided that day he would take one path and keep the other path for another day, although he knew that one leads on to the another way. अब आपके पास दो ऐसे क्रॉस में जा रहे हो, आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, देन यू कांट वॉक अपॉन द अनदर रोड। आपने साइंस ले लिया है, साइंस में 2 महीने पढ़े और फिर ऐसा लगा कि नहीं मजा आ रहा है, तो यू कांट टेक कॉमर्स स्ट्रेट अवे, देन यू हैव ऑलरेडी चोजन योर पाथ।
Okay, write that. He knew that he could not go back on the choice that he had made. Similarly, even in our life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option, and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. Okay, now last पैराग्राफ. आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई. शाई यहाँ पे ग्रीफ, दर्द, दुख. ठीक है. समवेयर एजेस एंड एजेस, हेंस two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Now this is very interesting. ठीक है. साई यहाँ पे क्या है, डीप ब्रेथ, दुख, दर्द के साथ वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. एंड हेंस, ये जो वर्ड हेंस है, it is for the future. So what he wants to say, that he says that in future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such point in life that there were two options for him, and he traveled on the road which had been traveled upon by a lesser number of people. That decision of his decided his future. Similarly, in future, when you grow up, then you will still say that once upon a time when you were young, you had two options. Okay, the choice that you made you what you became of it. ठीक है, कोई engineer बन गया, कोई doctor बन गया. ठीक है, so you have path and you have choose your career. This is very strong message for all the students like you, that you should be wise and very careful while making choice out of the option that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. Okay, got it? So that's the end of your poem. So please do like, share, comment, and subscribe on my channel. Thank you very much. Okay, bacho.